और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री अब सम्मान गार्ड का निरीक्षण करेंगे। Ladies and gentlemen, the Honorable Raksha Mantri will now inspect the Guard of Honor. देवियों और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री अब इम्फाल के कमान अधिकारी कैप्टन कमल कुमार चौधरी, विभागाध्यक्षों और सीनियर मोस्ट मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर से परिचित कराए जा रहे हैं। Ladies and gentlemen, the Honorable Raksha Mantri is now being introduced to the commanding officer and heads of department designate officers and senior most master chief petty officer of Imphal. सभी सज्जनों से अनुरोध है कि वो खड़े होकर माननीय रक्षा मंत्री का अभिनंदन करें। All gentlemen are requested to rise and greet the Honorable Raksha Mantri.
देवियों और सज्जनों, श्री संजीव सिंघल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड अब सभा को संबोधित करेंगे। Ladies and gentlemen, Shri Sanjeev Singhal, Chairman and Managing Director, Mazgaon Dock Shipbuilders Limited, will now address the gathering. Check. Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, Admiral R. Hari Kumar, Chief of Naval Staff, Honorable Member of Lok Sabha, Shri Arvind Sawant ji, Vice Admiral D.K. Tripathi, Flag Officer Commanding in Chief, HQ WNC, Vice Admiral Kiran Deshmukh, CWP&A, Vice Admiral Sanjay Bhalla, Chief of Staff, HQ WNC, Vice Admiral R. Swaminathan, DGNP Mumbai, Flag Officers, Senior Officers from MOD, former CMDs, former and current Directors and CVO of MDL, Captains of Indian Industry, formidable crew of Imphal, brilliantly led by the Commanding Officer Designate Captain Kamal Chaudhary, distinguished guests, representatives of the media, members of the MDL family, ladies and gentlemen, a very good afternoon. नदी सा चल, सरोवर सा रुक नहीं, अपनी ख्वाहिशों को सीमित कर नहीं, अभी ख्वाहिशों के परिंदों की उड़ान बाकी है, क्या फिक्र तुझे, अभी पूरा जहान बाकी है. It is indeed a matter of distinct honor, pride and privilege for me to accord a warm welcome to the Honorable Raksha Mantri ji and all the distinguished guests to the commissioning ceremony of INS Imphal, the third ship of Project 15 Bravo guided missile destroyers. The commissioning of INS Imphal is a celebration of our glorious maritime heritage and the rich shipbuilding tradition. As a follow-on of the prestigious Kolkata-class destroyers, this ship is once again a powerful testimony to the indigenous design and build capability of frontline warships by Mazgaon Dock Shipbuilders Limited. Imphal, like the first two ships of the project, INS Visakhapatnam and INS Marmugao, is sure to draw global attention due to her sheer size, ordnance delivery potential, and multi-dimensional capabilities, with embedded quality certification at every stage, from design to construction and trials. The ship boasts of several new design features, giving her enhanced operational capabilities in terms of survivability, stealth, seakeeping, ship handling, and state-of-the-art weapons sensor fit. Imphal is the first amongst all Project 15 Bravo ships which is fitted with upgraded BrahMos missiles, having dual-role capability of long-range and land attack. Imphal is also the first naval warship being commissioned with accommodation for women officers and sailors. Today, India has everything it takes to be a warship building superpower. With the springboard of design expertise at the Indian Navy's Warship Design Bureau and an accumulated indigenous experience of building successful warships by shipyards like Mazgaon Dock Shipbuilders Limited. It gives me immense pleasure to report that the tone and tenor of the D448 reading of Imphal, with only 37 liabilities to be liquidated, is a vast improvement compared to the earlier delivered destroyer, INS Visakhapatnam, with a total of 150 D448 liabilities, a significant reduction of more than 75% with respect to first of class. These figures are truly impressive, considering the volume of the ship and vast number of systems functioning on board. Furthermore, MDL not only completed the sea trials with fewer number of sorties in comparison with the earlier ships, but also carried out a number of trials that are traditionally done post-commissioning. In short, the ship's operational readiness is multiple notches above than a normal warship at commissioning. The ship is being delivered in a time period of 87 months from the commencement of production, including the lockdown period and COVID-19 restrictions. This is a reduction by 19 months as compared to construction timelines of INS Visakhapatnam and 14 months with respect to construction timelines of INS Marmugao, the first and second ships of Project 15 Bravo respectively. MDL, together with Indian Navy and various stakeholders in the supply chain, remains committed to further significantly trim down the build period. From the Navy's perspective of integrating the ship with the fleet,
It is my pleasure to mention that Imphal is the most combat-ready platform being delivered by MDL to date, and that too over 4 months ahead of the contractual schedule. The hats of almost all available electrical and weapon equipments have been completed. As far as SATs are concerned, the same have been completed for BrahMos, IRL, ITTL, Kavach, and SRCG. Balance activities would also be completed soon. Hence, the fleet integration of this vessel will be much faster. At this historic occasion, I would like to mention that we are very thankful to the guidance provided by various echelons of Department of Defense Production, Secretary Defense Production, and the Indian Navy, Chief of Naval Staff, CNC West, BCNS, WDB, CWP&A, DG, CSO Tech, HQWNC, ASD Mumbai, WPS Mumbai, DG NATA, and various trial teams and ship staff, without whose active assistance and cooperation, we would not have achieved this feat. As CMD MDL, I would like to reassure the August gathering here and the Indian Navy that MDL is fully committed to build weapon and sensor-intensive capital warships that would serve as potent cutting-edge platforms for the Indian Navy. We are also committed to explore possibilities to export some of the scaled-down versions of the platforms to developing economies that would form a formidable force for their maritime defense. I would like to thank the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, Admiral R. Hari Kumar, the Chief of Naval Staff, and other dignitaries for taking out time from their hectic schedule to be with us on this historic occasion. And I am sure this will be the biggest motivating factor for both the ship's crew as well as Team MDL. As I draw my address to a close on this momentous occasion of commissioning of Imphal, I wish the Indian Navy, the ship's crew who have been privileged and destined to serve on board, a very enriching stint in the maritime defense of our nation. With fair winds, following seas, fathoms beneath your keel, may you touch glories always. Hit first, hit hard, keep hitting. Thank you very much. Jai Hind, Shanno Varna. देवियों और सज्जनों, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार अब सभा को संबोधित करेंगे। Ladies and gentlemen, Admiral R. Hari Kumar, the Chief of the Naval Staff, will now address the gathering. Shri Rajnath Singh ji, Honorable Raksha Mantri, Shri Eknath Shinde ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Vice Admiral Dinesh Tripathi, Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Kiran Deshmukh, CWP&A, Shri Sanjeev Singhal, CMD MDL, Flag Officers, Captain KK Chowdhury, Commanding Officer, INS Imphal, respected veterans, officers, Ships Company of INS Imphal, Team MDL, all distinguished dignitaries present here, Excellencies, friends from the media, ladies and gentlemen. It is with immense pride that I welcome the Honorable Raksha Mantri ji to the commissioning ceremony of INS Imphal. Named after the capital of Manipur, she is the first warship to represent a prominent city of Northeast Bharat, aptly highlighting the importance attached by the government to this region. Imphal is the third in the Project 15 Bravo class of guided missile stealth destroyers, and as is the case with her predecessors, she has been fully conceptualized, designed and constructed indigenously. Thus, she has the distinction of being a shining symbol of Bharatiya Nausena's unflinching commitment to the vision of Atmanirbharta, as well as a testament to Ek Bharat, Shresth Bharat. INS Imphal will not only tackle physical threats that emanate at or from the seas, but more importantly, through a demonstrated strength of an integrated Bharat, she will deter nefarious designs trying to subvert our national unity. Once commissioned, the ship's crew will comprise personnel
from every cross-section of our society, from every region and state of our demographically rich country, all forged into one strong team that is ready to stake their lives for each other and for our sacred Tiranga, reflecting Bharat's inherent ekjutta. Even as we speak, we have 4 destroyers of 15 Alpha and Bravo class deployed to counter piracy and drone attacks on merchant shipping. Also, we have air surveillance by Sea Guardians, P8Is, Dorniers, helicopters and Indian Coast Guard units, all deployed jointly to counter these threats. As a Navy, we have taken upon ourselves to induct at least one Agniveer from each district, each block and each village of our country. Our strategy is to attract youth, both men and women, from every corner of the country, upskill them when in service, certify their abilities through educational institutions, inculcate the spirit of nationalism, and ensure that they rejoin the civil sector as invaluable assets. The vision is to percolate such a nationalistic workforce across the length and breadth of our country. So it is in this context, Warship Imphal holds a special place in the Navy for the state of Manipur, for the Northeast, as well as for Bharat. So as reflected in the ship's crest, true to the spirit of Kangla Sa, with its dragon head and the lion's body, I am confident that this ship will breathe fire upon the enemy and demonstrate unflinching resolve in the face of adversity. It is no surprise that Imphal is the first warship to have successfully undertaken test firing of the BrahMos surface-to-surface missile even before her commissioning. So to the commanding officer and the proud commissioning crew, continue to perform with the same zeal and true to your motto, be Sadaiva Tatpar, meaning always ready to meet any challenge and every mission in service of the Navy and the nation. Project Power of a resurgent Bharat, one with an iron fist in a velvet glove. As I look at this magnificent grey hull, I am filled with a sense of accomplishment as Imphal stands testament to the prowess and professionalism of MDL, pride of the thousands whose work in MDL exudes this professionalism, the persistence of the warship overseeing team, the precision of our warship design bureau, and the perseverance of the commissioning crew. So my compliments to all those who worked tirelessly to deliver a hat-trick of destroyers. Visakhapatnam in 2021, Mormugao in 2022, Imphal in 2023. And I'm sure Surat, the fourth one, will join her illustrious sister ships in the next year in 2024 to make it 4 in a row. So before concluding, I thank the Honorable Raksha Mantri ji for being here with us today and the continued support of Ministry of Defence for building our platforms indigenously. Thank you. Shano Varan. Jai Bharat. Ladies and gentlemen, on the orders of the Officer of the Day, Lieutenant Commander Anshu Bhau, the ship's commissioning color guard with Lieutenant Devashish Singh Dev as the Officer of the Guard will march on to the helicopter deck and take post towards the aft edge of the hello deck for the color ceremony. देवियों और सज्जनों, दिवस अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर अंशु भाऊ की कमान पर जहाज के कमिश्निंग निशान गार्ड के साथ गार्ड के अधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट देवाशीष सिंह देव हेलीकॉप्टर डेक पर मार्च करेंगे और निशान समारोह के लिए हेलो डेक के पिछले किनारे की ओर रुख करेंगे।
Ladies and gentlemen, the commanding officer designate Captain Kamal Kumar Chaudhary will now read out the commissioning warrant. देवियों और सज्जनों, नामित कमान अधिकारी कैप्टन कमल कुमार चौधरी अब कमिश्निंग वारंट पढ़ेंगे। Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Imphal be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 26th day of December 2023 or as soon thereafter as circumstances permit. Indian naval ship Imphal will be administered by the Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command. Given under my hand this, the 26th day of December 2023. Signed, R. Hari Kumar, Admiral, Chief of the Naval Staff. मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों से निशान समारोह के लिए पद लेने का अनुरोध करता हूं। May I now request all the dignitaries to take post for the colors ceremony. In a few minutes, we will witness the commissioning ceremony. At colors, the guard will present the Rashtriya salute, which will be followed by the hoisting of the national flag on the flag staff in the forward and simultaneous hoisting of the naval ensign on the ensign staff in the aft. The naval band will play the national anthem during the hoisting of the flag and ensign. Along with the last bars of national anthem, the commissioning pennant will be hoisted on the mast and yard 12706 and will be inducted in the Indian Navy as Indian Naval Ship Imphal. अब हम कुछ ही मिनटों में कमिश्निंग समारोह के गवाह बनेंगे। निशान के समय गार्ड राष्ट्रीय सलामी प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद आगे के ध्वज स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज और साथ ही पीछे के ध्वज स्तंभ पर नौसेना का ध्वज फहराया जाएगा। झंडा और पताका फहराने के दौरान नौसेना बैंड राष्ट्रगान बजाएगा। राष्ट्रगान की अंतिम पंक्तियों के साथ कमिश्निंग पेनेंट को मास्ट पर फहराया जाएगा और यार्ड 12706 को भारतीय नौसेना पोत इम्फाल के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। On the announcement of 1 minute for colors, I would request all of you to please rise and face the ship for the colors ceremony. During colors, personnel in uniform are to salute. निशान के लिए 1 मिनट की घोषणा पर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया खड़े हो जाएं और निशान समारोह के लिए जहाज की ओर देखें। निशान के दौरान वर्दीधारियों से अनुरोध है कि वे निशान को सलामी दें। देवियों एवं सज्जनों, निशान समारोह अब शुरू होगा। Ladies and gentlemen, the color ceremony will start now.
देवियों और सज्जनों, गर्व से आपके सामने है भारतीय नौसेना पोत इम्फाल। Ladies and gentlemen, we proudly present to you the Indian naval ship Imphal. मैं सभी मेहमानों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी जगह की ओर प्रस्थान करें। निशान गार्ड अब हेलीकॉप्टर डेक से मार्च करेगा और बाहर निकलते समय माननीय रक्षा मंत्री को सलामी देगा। May I request all guests to please take your places. The commissioning color guard will now march off the helicopter deck, saluting the Honorable Raksha Mantri while exiting. देवियों और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री अब सभा को संबोधित करेंगे। Ladies and gentlemen, the Honorable Raksha Mantri will now address the gathering. महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार, श्री संजीव सिंघल सीएमडी मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, वाइस एडमिरल डीके त्रिपाठी सी वेस्टर्न नेवल कमांड, वाइस एडमिरल किरण देशमुख, कंट्रोलर ऑफ वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन, कमांडिंग ऑफिसर INS इम्फाल कैप्टन के चौधरी, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अन्य सारे सीनियर ऑफिशियल्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मीडिया के मित्रगण, देवियों व सज्जनों, आज INS इम्फाल की कमीशनिंग के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। INS इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति MDL एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। INS इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, INS इम्फाल की विशेषताओं पर यदि हम गौर करें तो हम पाएंगे कि इसका खुद का नाम इम्फाल के नाम पर रखा गया है, जो नॉर्थ ईस्ट की ग्लोरी को प्रदर्शित करता है। इसका सैंक्शन दिल्ली में हुआ, जो उत्तर भारत में है। जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत INS इम्फाल आता है, उस 15B प्रोजेक्ट में देश के 4 बड़े शहर यानी विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव, इम्फाल और सूरत के नाम आते हैं। INS इम्फाल खुद विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत आता है, जो दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करता है। इसे बनाया गया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, जो मुंबई यानी पश्चिमी भारत में है। तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, हर जगह का प्रताप INS इम्फाल में शामिल है, जो भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है। साथियों, मेरी दृष्टि से INS इम्फाल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है
उसका पूरी तरह से भारत में ही कंसेप्चुअलाइज्ड, डिजाइन और कंस्ट्रक्टेड होना। आप जब INS इम्फाल के डिफरेंट पार्ट्स पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि INS इम्फाल पर ब्रह्मोस एयर स्पेस ने ब्रह्मोस मिसाइल इंस्टॉल किया है। इस पर टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स को L&T ने इंस्टॉल किया है। रैपिड गन माउंट को भेल ने इंस्टॉल किया है। मीडियम रेंज मिसाइल्स को BEL ने इंस्टॉल किया है और इसके अलावा कई सारे स्टार्टअप्स भी इसके निर्माण में शामिल हैं। साथियों, MSME से भी इनपुट इसमें हासिल हुए हैं। मेरे कहने का आशय है कि भारत के अलग अलग शक्तियों के सामूहिक प्रयास से INS इम्फाल का निर्माण हुआ है। यह देखकर मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ तो परंपरा ही है अलग अलग शक्तियों के समुच्चय से, यानी कॉन्ग्लोमरेशन से एक महाशक्ति के निर्माण की। आप सब अवगत होंगे कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तब एक समय ऐसा भी आया कि देवतागण पराजय की कगार पर पहुंच गए, क्योंकि उन सबके पास अलग अलग शक्तियां थीं और वह सब अपनी शक्तियों का प्रयोग अलग अलग कर रहे थे। वरुण देवता में जल शक्ति थी, पवन देवता में वायु की शक्ति थी, अग्नि देवता में अग्नि की शक्ति थी, देवताओं के राजा इंद्र के पास उनका वज्र था। लेकिन यह सारी शक्तियां अलग अलग रहकर असुरों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रही थीं। तब इन सब ने निर्णय लिया कि यह सब अपनी शक्तियों के समुच्चय यानी कांग्लोमरेशन से महाशक्ति का निर्माण करेंगे और उस महाशक्ति के रूप में मां जगदम्बा का अवतार हुआ, जिन्होंने दानवों का वध किया। साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सब अलग अलग रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते रहे तो हम शायद उस तरह की सफलता हासिल न कर सकें जिस प्रकार की सफलता हम चाहते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर एक साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। इसी बात को हम ज्वाइंटनेस, इंटीग्रेशन या होल ऑफ द नेशन अप्रोच के रूप में देख सकते हैं। आज जिस प्रकार से INS इम्फाल में इतने सारे तत्वों ने मिलकर इसे एक मूर्त रूप दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात मां जगदम्बा का प्राकट्य हुआ है। इसलिए इस देश का कोई भी वर्ग हो, किसान से लेकर मजदूर तक, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक, साइंटिस्ट टेक्नीशियन से लेकर वैरियस तक, सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हमारा देश महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो सके। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले सिंधुदुर्ग में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैं नेवी के साथियों से मिला था, उस समय हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे भी मौजूद थे। तो मैंने वहां पर भी एक बात कही थी, एक लंबे समय तक वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लैंड बेस्ड थ्रेट्स को ही तवज्जो दी जाती रही है, जिस कारण आर्मी और एयरफोर्स पर तो ध्यान दिया जाता था, किंतु नेवी पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना दिया जाना चाहिए था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन ने नेवी के महत्व को रेखांकित किया और आज नेवी पर उतना ही ध्यान दिया जा रहा है जितना कि भारत की अन्य आर्म्ड फोर्सेस पर। साथियों, इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड की दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक आइलैंड कंट्री है। अब आपके मन में निश्चित रूप से यह प्रश्न उठ सकता है कि भारत आइलैंड कंट्री कैसे हो गया। आप सब ज्योग्राफी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और ज्योग्राफी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पहाड़, पठार, नदियां इत्यादि आते हैं तथा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर मनुष्य का समाज और उसकी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था आती है। फिजिकल ज्योग्राफी के अनुसार यदि आप देखें तो भारत के उत्तर में उसके लैंड बॉर्डर्स हैं तो दक्षिण में समुद्र है। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के अनुसार यदि देखा जाए और उसमें भी यदि आप अपना ध्यान हम इंटरनेशनल ट्रेड की ओर केंद्रित करें तो हम पाएंगे कि भारत और दुनिया के बीच जो गुड्स का ट्रेड होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लैंड बॉर्डर्स की ओर से नहीं बल्कि समुद्र से होकर गुजरता है। तो साथियों,
यदि आप ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड के पर्सपेक्टिव में देखें तो उत्तर में हिमालय के कारण और वेस्ट में पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण वहां से हमारा ट्रेड ज्यादा नहीं हो पाता। हमारा ज्यादातर गुड्स ट्रेड समुद्र से होकर आता है, इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर यदि हम चलें तो भारत हमें एक आइलैंड के रूप में दिखाई देता है। अब चूंकि हम ट्रेड पर्सपेक्टिव से आइलैंड कंट्री हैं और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमारे ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है हम अपनी स्ट्रांग नेवल कैपेबिलिटी को डेवलप करें। साथियों, हम सब जानते हैं युद्ध जो होता है वह सामान्यतः दो सेनाओं के बीच होता है। एक सेना विजय हासिल करती है और दूसरी सेना को पराजय का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच में नहीं होता है, बल्कि युद्ध दो राष्ट्रों के बीच में होता है और किसी भी राष्ट्र में रहने वाले किसान, मजदूर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, डॉक्टर आदि भी उस युद्ध में बराबर के भागीदार होते हैं। यदि किसी किसान के पैदा किए अन्न को खाकर फौजी, हमारा बहादुर फौजी यदि युद्ध लड़ने जा रहे हैं और जंग जीत रहे हैं, यह जीत देश के किसानों की भी जीत होती है। यदि कोई मजदूर लोहा या स्टील ढाल रहा है, उस लोहे या स्टील से आगे चलकर वह कोई हथियार बन रहा है जिससे सैनिक विजय हासिल कर रहा है, तो यह विजय हमारे मजदूर भाई की भी होती है। इसलिए मैं देश के सभी किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों से यह कहना कहूंगा कि आप सभी सम्मिलित रूप से भारत की सुरक्षा एवं प्रगति के वाहक हैं। इसलिए आप जब भी अपना काम कर रहे होते हैं तो उसे केवल काम निपटाने के तौर पर ही न करें। आप अपने कर्म को राष्ट्र और समाज की बेहतरी को सामने रख कर करें, यह मेरा विनम्र निवेदन है। मुझे इस संबंध में एक घटना का स्मरण आता है जिसका जिक्र मैं आप सबके सामने यहाँ पर करना चाहूंगा। यह कहानी है 3 मजदूरों की जो किसी जगह पत्थर तोड़ रहे थे। एक राहगीर उन मजदूरों को बगल से गुजर रहा था। राहगीर ने मजदूरों से बारी बारी पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। पहले मजदूर ने कहा कि वह पत्थर तोड़ रहा है। दूसरे मजदूर ने कहा कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम कर रहा है। तीसरे मजदूर ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया और उसने कहा कि वह पत्थर को एक आकृति दे रहा है जिससे वह एक विराट और सुंदर मंदिर के निर्माण में अपना एक योगदान दे रहा है। अब साथियों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ने का, लेकिन उनका नजरिया कितना अलग अलग था। इसी प्रकार जब हमारे किसान, मजदूर, वैज्ञानिक, इंजीनियर काम कर रहे होते हैं तो यह बात निकलकर सामने आती है कि आप काम तो अपना अपना ही कर रहे होते हैं, पर आपका नजरिया क्या होता है, आपकी भावना क्या होती है, यह डिसाइड करता है कि आपके राष्ट्र का भविष्य कैसा होगा। यहां हम सब अपने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, लेबरर्स की नेशनल स्पिरिट से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह सभी लोग जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी सेनाओं की मजबूती के लिए प्रयासरत हैं, यह लोग इस तरह से हमारे सैनिकों के समान ही हैं। इसलिए मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि INS इम्फाल की नौसेना में कमीशनिंग पर MDL के सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं वह सभी बधाई के पात्र हैं। तहे दिल में उनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, INS इम्फाल भारत की बढ़ती समुद्री ताकत को दिखाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडो पैसिफिक रीजन में INS इम्फाल जल में व यश्य बल में व तस्य, यानी जिसका जल उसका बल के हमारे सिद्धांत को और मजबूती प्रदान करेगा। बहनों भाइयों, अंत में अपनी बात समाप्त करने से एक और बात कहना चाहता हूं। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए MV प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में MV
साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके में होने वाले समुद्री व्यापार सागर से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। इसके लिए हम मित्र देशों के साथ मिलकर सी लेन्स को मैरीटाइम कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर बनाए रखेंगे। कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर जिस हद तक बना सकते हैं हम बनाएंगे। हम अपने लहरों के पहरेदारों की काबिलियत और ताकत पर पूरा भरोसा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है। मैं आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं और इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि हम सब इसी प्रकार से राष्ट्र निर्माण में एक साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे को, जिन्होंने सारी व्यस्तताओं के बावजूद यह फैसला किया कि चूंकि हमारी यह सेना से संबंधित जवानों का यह फंक्शन है और हमारे देश की एक वारशिप की लॉन्चिंग आज है, इसलिए उन्होंने पूरा समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने की उन्होंने कोशिश की है। इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं पुनः हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद। एक बार सभी बोलिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री अब जहाज की पट्टिका का अनावरण करेंगे। मैं सभी मेहमानों से अनुरोध करता हूं कि वे बैठे रहें। देवियों और सज्जनों, भारतीय नौसेना पोत इम्फाल और इस क्षण को संभव बनाने वाले सभी कर्मियों के लिए जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, the chief guest will now proceed for a walk around of the ship, followed by exchange of mementos on forecastle. देवियों और सज्जनों, मुख्य अतिथि अब जहाज में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात फोक्सल पर स्मृति चिन्ह विनिमय का हिस्सा बनेंगे। Thank you, ladies and gentlemen, for being present with us on this historic and momentous occasion. May I request all guests to kindly proceed for lunch. The counters are laid down behind the respective enclosures. देवियों और सज्जनों, इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए आपका धन्यवाद। सभी गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने अपने एन्क्लोजर्स में भोजन के लिए आगे बढ़ें।
ऑफ करू उदय ऑफ करू ना